परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द
The first offering of the Uttamottama Seva at the feet of Devi Nityanandeshwara Parashakti Sameta Sri Nityanandeshwara Paramashiva is the offering of the Chaturveda. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परम शिव चतुर्वेद प्रिय चतुर्वेदम अवधारय. ऋग्वेद. हरि ओम. अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होता आरं रत्नदातामं. हरि ओम. यजुर्वेद. हरि ओम. इषेतोर्जेत्वा वायवस्तोपायपस्तदेवो वस्तविता प्राप्ते तुष्टेष्टतमाय कर्मणे. हरि ओम. सामवेद. हरि ओम. अग्न आयाहि पीतये गृहाणो हव्यदातये निहोता सप्ति बर्हिषि. हरि ओम. यजुर्वेद. हरि ओम. तन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिश्रवन्तु नः. हरि ओम. The next offering of the Uttamottama Seva at the feet of Devi Nityanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nityanandeshwara Paramashiva is the sloka. Devadevottama Devata Sarvabhauma Akhilanda Brahmandanayaka Sri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nityanandeshwara Paramashiva Shloka Priyagama Slokam Avadharaya. श्री भगवान. The next offering of the Uttamottama Seva at the feet of Devi Nityanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nityanandeshwara Paramashiva is the offering of the Agama Shloka. Devadevottama Devata Sarvabhauma Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Sri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Sri Nityanandeshwara Paramashiva Agama Shloka Priyagama Shlokam Avadharaya. श्री भगवानुवाच अति कौतूहलाविष्ट पृच्छस्येतच्छृणु प्रिये यन्मे नेत्रान्तरे वह्ने यद्वानृतमनुत्तमं तत्सर्वं कथयिष्यामि योगयुक्त्या शृणु प्रिये यत्स्वरूपं निजं शुद्धं व्यापकं सर्वतोमुखं सर्वभूतान्तरावस्थं सर्वप्राणिषु जीवनं योगगम्यं दुरासादं दुष्पापमकृतातमभिः ज्ञानादिषड्गुणायेते तत्रस्थाः प्रभवन्ति सा वै महाक्रिया रूपा संस्थितैका क्रियामता. परमशिवोऽहम्
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्या Next offering of the Uttama Seva at the feet of Devi Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva is the offering of the Dravida Vedam. Devadevottama Devata Sarvabhauma Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva Dravida Veda Priya Dravida Vedam Avadharaya வேயுரு தோழி பங்கன் விதமுண்ட கந்தன் மிக நல்ல வீணை கதவி மாசரு திங்கள் கங்கை முடிமேல நின்று என் உளமே புகுந்த அதனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பிரண்டும் முதனே மாசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல என் அடியாதவர்க்கு மிகவே சிவா திருச்சிற்றம்பலம். आनन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम् Offering of the Uttama Seva at the feet of Devi Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva is the offering of the Stotra Seva. Devadevottama Devata Sarvabhauma Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva Stotra Priya Stotram Avadharaya. ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्वात्मकाय सर्वमंत्र स्वरूपाय सर्वतंत्र स्वरूपाय सर्वयंत्राधिष्ठिताय सर्वतंत्र स्वरूपाय सर्वतत्वविधुराय ब्रह्मरुद्रावतारिणे नीलकंठाय पार्वती मनोहराय सोमसूर्याग्निलोचनाय भस्मोद्धूलित विग्रहाय महामुनिमुकुटधारणाय माणिक्यभूषणाय सृष्टिस्थिति प्रलय काल रौद्रावताराय दक्षाध्वरध्वंसकाय महाकाल भेदनाय मूलाधारेकनिलयाय तत्त्वातीताय गंगाधराय सर्वदेवादिदेवाय सदाश्रयाय वेदांतसाराय त्रिवर्गसाधनाय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायकाय अनंत वासिकी तक्षककार कोटक शंखकुलिक पद्म महापद्मेति अष्टमहानाह कुलभूषणाय प्रणवस्वरूपाय चिदाकाशाय आकाशदिक्स्वरूपाय ग्रहनक्षत्रमालिने सकलाय कलंकरहिताय सकललोकैककर्त्रे सकललोकैकभद्रे सकललोकैकसंहर्त्रे सकललोकैकगुरवे सकललोकैकसाक्षिणे सकलनिगमगुह्याय सकलवेदान्तपारगाय
सकललोकैकवरप्रदाय सकललोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिराभासाय निराभासाय निरामयाय निर्मलाय निर्मदाय निश्चिन्ताय निरहङ्काराय निरङ्कुशाय निष्कारणाय निर्गुणाय निष्कामाय निरुपप्लवाय निरपद्रवाय निरवध्याय निरन्तराय निष्कारणाय निरन्तकाय निष्प्रपञ्चाय निस्सङ्गाय निर्द्वन्द्वाय निराधाराय निराघाय निष्क्रोधाय निर्लोपाय निष्पापाय निरपद्रवाय निर्विकल्पाय निर्भेदाय निष्क्रियाय निस्तुलाय निःशंशयाय निरुपमविभवाय नित्यशुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तस्वरूपाय तेजोरूपाय तेजोमयाय जय जय रुद्र महारौद्र भद्रावतार महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वांग खड्ग चर्म पाशांकुशडमरु शूल चाप बाण गदा शक्ति भिंडिपाल तोमर मुसल मुद्गर पाश परिग पुशुंडी षटग्नि चक्राध्यायुध भीषणकर सहस्रमुखद्रंशाकरालवदन विकटाट्टहास विस्फारित ब्रह्मांड मंडल नागेन्द्र कुंडल नागेन्द्रहार नागेन्द्र वलय नागेन्द्र चर्मधर मृत्युंजय त्र्यंबक विश्वरूप विरूपाक्ष विश्वेश्वर वृषभवाहन विश्वभूषण विश्वतोमुख सर्वतो रक्ष रक्ष मां ज्वल ज्वल महामृत्युभयम् अपमृत्युभयं नाशय नाशय चोरभयम् उत्साटय उत्साटय विषसर्पभयं समय समय चोरान् मारय मारय मम शत्रून् उच्चाटय उच्चाटय कुटारेण भिंडी भिंडी खड्गेन चिंडी चिंडी खट्वांगेन विपोदय विपोदय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः संताटय संताटय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्ड मारीच वेदाल ब्रह्मराक्षसगणान् संताटय संताटय माम् अभयं कुरु कुरु युक्तस्वं माम् आश्वासय आश्वासय नरकभयां माम् उद्धर उद्धर सञ्जीवय सञ्जीवय शत्रुभ्यां माम् आप्यायय आप्यायय दुःखादुरं माम् आनन्दय आनन्दय शिवकवचेन माम् आच्चाटय आच्चाटय मृत्युंजय त्र्यंबक सदाशिव परमशिव नमस्ते नमस्ते। नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ 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 नित्यानन्द परमशिवोऽहम् नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परम The next offering of the Uttamottama Seva at the feet of Devi Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva is the offering of the Sangeeta Seva. Deva Devottama Devata Sarvabhauma Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva
संगीत प्रिय संगीतम् अवधारय। नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपे नित्यम् अक्षयं परमं शिवं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्द नमोऽस्तुते। कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्द नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धमनुत्तमं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्द नमोऽस्तुते। कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्द नमोऽस्तुते। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्वं निवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्द नमोऽस्तुते। कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्द नमोऽस्तुते। सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः एव देवासुरगणान् लोकान् पथिगभस्तिभिः कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्द नमोऽस्तुते। कोटिसूर्यस्वरूपिणम् आनन्दगन्ध ईश्वरं भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्द नमोऽस्तुते। भक्तहृदयनिवासिनं नित्यानन्द नमोऽस्तुते। नित्यानन्द नमोऽस्तुते। नित्यानन्द नमोऽस्तुते। परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् शिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् शिवोऽहम् ॐ
परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द 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 परमशिवोऽहम्. The next offering of the Uttamottama Seva at the feet of Devi Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva is the offering of the Nitya Seva. Deva Devottama Devata Sarvabhauma Akilanda Koti Brahmanda Nayaka Shri Nityanandeshwari Parashakti Sameta Shri Nityanandeshwara Paramashiva Nitya Priya Nrittam Avadharaya. नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ 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 नित्यानन्द परमशिवोऽहम् Of the Uttamottama Seva at the feet of Devi Nityanandeshwari Parashakti Sameta
Sri Nityanandeshwara Paramashiva is the offering of the Paramashiva Shakti Avishkarana. देवदेवोत्तम देवता सार्वभौम अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति समेत श्री नित्यानंदेश्वर परमशिव शक्ति आविष्करण प्रिय परमशिव शक्ति आविष्करणम् अवधारय. नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. Nityanandam, I welcome all the participants, viewers, disciples, and devotees of His Divine Holiness who has joined us today for the most extraordinary and mind-blowing segment of today's Uttamattama Seva, and that is Shakti Avishkarana, or Power Manifestation segment. I welcome all of you with my humble obeisance. Today, all of you will be the first-hand witnesses of an extraordinary power being manifested live here on this Nityananda TV platform for all of you, and it is going to be the power of body scanning. And understand, that is just one power out of the 464 plus powers of Paramashiva that the supreme point of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nityananda Paramashiva, has beautifully initiated all his disciples, devotees, and partisans into. It's Swamiji's hard work and compassion that he has been working to build the only Hindu nation for past 26 years, to revive back that authentic Sanatana Hindu Dharma at its full glory. And one of the aspects under Sanatana Hindu Dharma is the science of power manifestation. 5,000 years ago, each and every being who lived on planet Earth were very familiar with these powers. And in fact, they used to manifest any powers they wanted at any time, any second. Because this was the lifestyle led by the people 5,000 years ago, and understand how we lived 5,000 years ago and how we are living now. The difference is, if I pull out anybody from the outer world and tell them that they are capable of manifesting the powers that they are watching on movies and reading on comic books, they'll think I'm crazy. And to break this, Swamiji has beautifully initiated the Balasins, devotees, and disciples to manifest these extraordinary powers and showcase it to all of you, to show you that you are also Paramashiva and you are also capable of manifesting all these 464 plus powers of you. And you might be wondering how we are manifesting these powers out of the blue. Understand, all it takes is just one initiation from His Divine Holiness for our third eye to get awakened. And once the third eye gets awakened, that is the door to manifesting all the 464 plus powers. And one of the powers that you'll be witnessing right now is the power of body scanning. A little about the power of body scanning. It is self-explanatory, exactly what it means. Once your third eye is awakened, your third eye is capable of manifesting all the powers, right? So body scanning is a power where the third eye scans one's body completely from head to toe, detecting any problems and giving the solution at the same time. So this is an extraordinary power. And another thing about body scanning is that it does not work from the binary logic. It works from the multi-dimensional logic. And understand, it does how doctors work. That's not how the third eye works. Because you have stomach pain, that does not mean it, if you're having stomach pain, it doesn't necessarily have to connect back to the surgery that you had 3 months ago, or you had some spoiled food. No, it can also be due to the incompletions that you hold, or the deep root patterns that you are dearly clinging on to that you don't know about or you're unaware about. So third eye goes to that detail, that subtle detail, and reveals what is the real issue that is causing this body to behave in a certain way, which is also an obstacle for you to manifest the reality that you want. And at the same time, giving you the solution to break this pattern or come out of the problem that you are going through. So this is an extraordinary power that is that we have been initiated into by His Divine Holiness.
And today we have a Balasit with us who will be manifesting the power of body scanning. Ma, would you like to introduce yourself? Yes, Ma. Nityananda, my name is Ma Vanshika and I'm 14 years old. And I've been studying in Nityananda Gurukul past 2 years and I've been manifesting a lot of powers just with one initiation of Swamiji and just by being in oneness with him. That's all. Yes. And we have our